Hello. Today's video is going to be made for ASA and we're going to be talking about Akbar the Great. So basically, Akbar the Great was born in 1542 and he died in 1605. He was the eldest son of Humayun. He was a very powerful emperor. When we talk about Akbar, he was born in Umarkot and he moved to Kabul when he was 3. He never learned how to read and write, yet he became a governor of Punjab when he was 12 years old. The next year, his father died when he was 13 years old. He became the emperor and he died at the age of 63. How do we know so much about Akbar's time in the subcontinent? We know about Akbar's time in the subcontinent because of Abul Fazl. He was a trusted historian in Akbar's courts and he was the one who wrote about Akbar everywhere. When we talk about the Akbar Nama, just to talk about a brief history, Abul Fazl, because he was part of Akbar's court of historians, he wrote everything that was in favor of Akbar. कोई भी चीज़ वो अकबर के खिलाफ नहीं लिख सकता था because he knew the next moment he writes something bad, अकबर उसका गला कटवा के उसको मरवा देगा. So just to talk about Akbar on the Akbar Nama, Akbar was intelligent, Akbar was pleasant, Akbar was generous, brave, enterprising, impressing, knowledge, eager to learn, knowledge of politics, knowledge of military and technical things. So anything and everything जो भी अच्छा quality है वो सारी अबुल फजल ने लिखती के अकबर करता था. Although this may not be the truth because but Abul Fazl was part of his court, तो उसको ये लिखना पड़ रहा था. Then again, when we talk about Akbar Nama, lamp, he was the lamp to the court of Timur. He was someone who illuminated India. So सारी अच्छाइयाँ लिख दी हैं अकबर नामे में उन्होंने. इनहेबिटेंट्स के बारे में अकबर क्या सोचता था इन द अकबरनामा इट सेज के इनहेबिटेंट्स के बारे में भी अच्छी चीज़ है क्योंकि अकबरनामा पढ़ता कौन था द पीपल ऑफ अकबर्स रेन एंड लोग अगर अपने बारे में बुरी चीज़ें पढ़ेंगे तो दे आर डेफिनेटली गोना गो अगेंस्ट देयर किंग. तो इसीलिए अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं कि द लोग वर फ्रेंडली, दे वर हॉस्पिटेबल, दे वर साइंटिफिक येट वेरी सिंपल, दे वर हार्ड वर्किंग, दे वर लॉयल, दे वर ट्रस्टवर्दी. अगर हम जगह के बारे में बात करें तो अबाउट द सब कॉन्टिनेंट अकबर सेड कि दे हैड अ लॉट ऑफ डायमंड माइंस, रूबीज, गोल्ड एक्सेट्रा. बहुत सारी माइंस हैं, सिल्वर, आयरन ओर, देयर वर फ्रूट्स, देयर वर फ्लावर्स, देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ क्लोथिंग, परफ्यूम्स, मेलोडीज, हर चीज़ थी इनके पास. गुड एलिफेंट्स, कैमल्स एंड ऑल्सो कैटल. ये सारी चीज़ें अकबर ने बोला था कि is what the subcontinent is. Then we come to talk about Rajputs and how Akbar won Rajput loyalty because Rajputs were one of the few tribes जो हमेशा अकबर के against रही थी. 1558 अकबर seized लाहौर, दिल्ली, आगरा, जयपुर, चारों जगह अकबर की हो गई. Yet still there were Rajput rebellions जो आगे पीछे से आती रहती थी. Then a major area that he took over was चित्तौड़. चित्तौड़ में 4 महीने अकबर actually had a siege set up. A siege is where बाहर आप बैठ जाते हैं and अंदर खाना भी नहीं जाने देते, आप अंदर कोई भी चीज़ नहीं जाने देते. So the people अंदर starve and वो end में हार मान ले. Here Akbar shot Jai Mal. He was a Hindu leader here and जब हिंदू लीडर मर गया the people thought कि Muslims cruel होंगे and इसीलिए they burned all their wives and वो तलवार लेके गेट से बाहर निकले to fight to their death. This was one of the battles जिसमें अकबर lost a lot of his men क्योंकि सामने वाली आर्मी आई ही इस मकसद से थी कि they're gonna die. Then we're going to talk about how Akbar used to organize his empire. Akbar ने सबसे अच्छी चीज़ ये की कि he divided his huge empire into small 15 provinces. मैनेजमेंट आसान हो गई, हर प्रोविंस को उन्होंने एक गवर्नर दे दिया एंड एवरी प्रोविंस हैड स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेड्स बना दिए. इससे मैनेजमेंट बहुत आसान हो गई. हाउ वॉज हिज एम्पायर रन? बेसिकली अकबर ने ये किया कि ही स्टार्टेड फेयर टैक्सेशन सिस्टम which meant 1/3 of tax for every person that grew crops. अब भले वो अमीर हो भले वो गरीब हो 1/3 of tax was charged on them. Second thing he did कि इसने अपने एडवाइजर्स फार्मर्स के बाद भेजे एंड फार्मर्स को एडवाइस दिलाई कि आप क्रॉप ग्रोथ अच्छी कैसे करो. अगर क्रॉप ग्रोथ अच्छी होगी प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे होगी तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा. एट द एंड ऑफ द डे Akbar wins in the whole scenario. 1582 if we talk about that कि slavery abolish हुई थी एंड अकबर ने ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ की थी फॉर हिज ओन पीपल.
Then we talk about the fact that Akbar shifted his capitals to three different places. शुरू में 1570 में से पहले आगरा एंड दिल्ली में उसका कैपिटल था, जिधर उसने फर्स्ट फ्यू स्टेट्स थी जो उसने कैप्चर की थी. देन व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर ऑन 1570 के बाद उसने कैपिटल सेट किया फतेहपुर सरकी में. फतेहपुर सरकी में वो इसीलिए किया क्योंकि देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ चिश्ती समथिंग, सूफी शेख सलीम चिश्ती. इन्होंने अकबर को बोला कि भाई आपके तीन बेटे होंगे. एंड अकबर को क्योंकि बेटा कभी नहीं था, एंड जब अकबर को पहला बेटा हुआ हु ही नेम्ड सलीम आफ्टर सूफी सलीम शेख चिश्ती, तो ही मेड द कैपिटल फतेहपुर सरकी, क्योंकि उनको लगा कि फतेहपुर सरकी इज़ अ लकी सिटी फॉर हिम. जब उसको कैपिटल बनाया आफ्टर ऑलमोस्ट अबाउट 14 ईयर्स ही रियलाइज कि उधर पानी बहुत कम था, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस कुड नॉट बी नो लॉन्गर बी द कैपिटल फॉर देम. Next, we talk about Akbar wanting a son. Fatehpur Sarki के बाद the last capital that Akbar made was Lahore. But when we talk about Akbar needing a son, अकबर के 2 या 3 बेटे आगरा में बहुत जवानी की उम्र में मर गए थे. Hence the reason why he thought Agra was not a lucky city. इसीलिए वो फतेहपुर सरकी गया. And फतेहपुर सरकी में जब पानी खत्म हो गया, he moved back to Lahore. The second person he used to go to was अजमेर शरीफ के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती. उसकी श्राइन पे he used to go and he used to pray कि उनको बेटा हो. तो these two were the places where he used to go very often. रास्ते में इन्होंने अपना रेस्ट हाउसेस बनवाए, वेल्स बनवाए, and everything was constructed in those routes. Next, we talk about Lahore, the last capital that Akbar actually made. लाहौर में द ट्रेड वॉज वेरी हाई क्योंकि द इरीगेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, फर्टाइल लैंड्स थे. अगेन दीज थिंग्स कम फ्रॉम द अकबरनामा एंड फ्रॉम द सोर्सेज के प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज थी लाहौर में. उसकी पोजीशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से सारा एम्पायर उधर से ब्लॉक होता था. लाहौर इज सेड टू बी द क्वीन ऑफ ऑल सिटीज़. इधर कारपेट्स होते थे, इधर स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, पोइट्स, हर कोई इधर रहने आ गया था. 1580s में was when the construction of Lahore Fort began. Then we talk about Akbar's religion policies, or before we even talk about Akbar's religion policies, we're going to talk about the River Ravi trickster. River Ravi trickster was a man जो एक लोगों से पैसे लेता था एंड बोलता था उनको कि मैं रिवर रावी पार करूँगा बहुत ही जल्द, आप चुटकी बजाएंगे मैं पार कर लूँगा. एज सुन एज पीपल पेड हिम मनी, वो पैसे लेके भाग जाता था और सामने वाली तरफ से कोई आवाज़ लगा के बोलता था कि मैंने पार कर लिया रिवर. अकबर वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. अकबर ने इस ट्रिकस्टर को बुलाया और इसको बोला कि भाई मुझे भी ट्रिक दिखाओ बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट द ट्रिक इज़. ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा. ट्रिकस्टर बहुत शर्मिंदा हुआ एंड उसने बोला कि भाई इट्स एक्चुअली अपना लोगों को बुद्धू बनाने की स्कीम एंड आई जस्ट टेक मनी ऑफ देम. तो होता ये है कि माई सन स्टैंड्स ऑन द अदर साइड, जिसकी मेरे जैसी आवाज़ है. इफ़ माई सन हैज़ द सेम वॉइस, वो उधर से खड़े होकर बोलता है कि आई हैव क्रॉस द इंडस रिवर एंड वी विन द मनी. तो ही फेल्ट अशेम्ड एंड अकबर ने उसको फिर इवेंचुअली मारा नहीं, उसको जाने दे दिया. देन वी टॉक अबाउट द women of the Mughal court. वो क्या करती थी? The women of the Mughal court were in a zanana. A zanana is a hareem जिसमें जिसका मतलब है sacred और forbidden. इस जगह पे सारी women रहती थी, even the dancing girls, the slaves, the relatives, अपना daughters, brides, सारे prince and kings की ये इसमें रहती ही women थी, except for those princes जो बहुत ही जवान थे. Then we talk about Akbar's lively mind. Again, according to the Akbarnama, सब चीज़ें अच्छी बताई हुई हैं अकबरनामे में. तो अकबर was very intricate बोलते हैं. एक मिनट he would be doing court dealings and next minute he would be अपना sharing camels की स्किन उतार रहे होते थे, स्टोन्स तोड़ रहे होते थे. ही इवन इज सेड टू हैव असेंबल्ड अ गन जो जब भी लंबे ट्रैवल पे जाते हैं तो उसको फोल्ड करके आप एक छोटे से डब्बे में डाल सकते हैं एंड एवरी टाइम यू वांट टू यूज़ इट आप उसको साथ कर देंगे. नेक्स्ट ही क्रिएटेड अ कैनन जो इतना हल्का था कि वो उसको एलिफेंट्स कैरी कर सकते थे. ही ऑल्सो क्रिएटेड अ टाइप ऑफ अ गन जिसमें 17 गन्स would be fired at the same time. He even created a cleaning wheel जिससे 16 guns एक साथ साफ हो सकती थी. Then we talk about Akbar's religion. When we talk about Akbar's religion, Akbar adopted a lot of Hindu customs. वो टर्बन भी पहनते थे, उनके टर्बन पे एक छोटा सा फेदर भी लगा हुआ था बहुत बार. And he also अपना married an Hindu Rajput lady के वो हिंदूज का भरोसा विन कर लें. Moving on from there, 1563
was when he stopped Hindu pilgrimage tax, he stopped forced sati, he stopped the collection of jizya tax. तो बहुत सारे हिंदुओं को लगा कि अकबर was actually on our side. Yet at the same time Muslims felt कि हमसे अकबर दूर जा रहा था. 1580 अकबर ने मोहम्मद द नेम मोहम्मद किसी भी बच्चे पे नहीं रखा जा सकता था बिकॉज अकबर बैंड इट. उसके थोड़े ईयर से बाद मॉस्क्स में अकबर ने बोला कि मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा, कोई सा भी नाम और ले ले मगर पब्लिक अनाउंसमेंट्स एंड प्रेयर्स में बोला नहीं जाएगा. इवन ही वेंट दिस फार कि उसने अरबिक पढ़ाई को डिस्करेज करना शुरू कर दिया. एंड अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट कि ये गलत हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स अकबर के भाई के साथ मिलके दे रिबेल्ड अगेंस्ट अकबर. अकबर का भाई बच गया, वो भाग गया उधर से एंड वो निकल गया. If we talk about Akbar and his religion, Akbar ने जब he was at Fatehpur Sarki, he had created a hall of worship. The hall of worship में scholars आते थे and पूरी रात debates चलती थी between Catholics, Jews, Christians, Muslims कि भाई कौन सा religion ज़्यादा बेहतर है. If we talk about Akbar again and his religious policies, Akbar later on in his life realized कि हम जो ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे लोगों से बोलते हैं कि भाई आप इस्लाम कबूल करो, that was wrong and that was actually said in the Akbar Nama. Again we don't know Akbar नामे में लिखा हुआ है तो सच है या झूठ है. Right at the same time, people started feeling that Akbar was a sun worshipper, sun and light की worship करता था, which to a lot of historians say कि true था because Akbar felt कि पुराने जो kings थे, leaders थे, वो सारे sun को worship करते थे and that was one of the reasons why they were successful. तो Akbar was willing to go to every length to be as successful as all the other leaders and इसीलिए वो pagan, which is non-Islamic practices भी adopt करने लगा था. When we talk about the non-Islamic or pagan practices, Akbar had started worshipping the sun. मगर Akbar Nama says कि Akbar sun को तो worship करता था मगर at the same time he used to worship the gods as well. अकबर ने एक नई चीज़ कराना शुरू करवा दी थी कि every time the candles were lit, वो लोगों को बोलता था कि आपको खड़े होके रहना है, कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि कैंडल जल रही है. एट द सेम टाइम सूरज कठन एक छोटा सा एक डिवाइस था जिससे कॉटन जलता था. हर शाम को वो एक कॉटन जलवाता था सूरज कठन से बिकॉज ही यूज्ड टू थिंक दैट इज़ अ सीक्रेट प्रैक्टिस एंड उसको आगे जाके प्रॉस्पेरिटी लाएगी उसके किंगडम में वो. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वो सनसेट होता था, एवरी सनसेट पे वो 12 कैंडल्स जलवाता था, वाइट कैंडल्स इन 12 गोल्ड के कैंडल स्टिक्स, वाइट कैंडल्स इन 12 कैंडल स्टिक्स जो गोल्ड की बनी हुई थी. Then when we talk about अकबर, celestial fires जलवाना शुरू करवा दिए थे उसने पूरे किंगडम में अपना. अकबर फेल्ट कि लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो उसने एक बड़ी सी आकाश दिया बनवाई विच वॉज अ बिग लैंटर्न जो कि 40 यार्ड से बड़ा था. दिस दो रीजंस थे फॉर दिस लैंटर्न के. नंबर 1 जो उनका दरबार था उसमें बहुत सारी लाइट आए एंड नंबर 2 जो बाहर रोड पे लोग घूम रहे हैं, जो इधर उधर ट्रेडर्स या लोग गुम हो जाते हैं, उनको भी रास्ते उनके नज़र आ जाएं. No one knew according to the Akbarnama कि अकबर कौन सा religion follow करता था because he used a lot of mix of a lot of religions. एक ऐसा भी टाइम आया था जब रोमन कैथलिक्स आए थे अकबर के पास एंड उन्होंने अकबर को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी एंड इफ़ दे वुड हैव सक्सीडेड अकबर को वो बोलते कि आप पोप के अंडर आते हैं एंड फिर सब कॉन्टिनेंट भी पोप के अंडर चलता. विच बिकॉज ऑफ अकबर बीइंग दैट पर्सन जो हर रिलीजन को सुनता था, उसने सुना ज़रूर मगर ही डिड नॉट एक्सेप्ट their offers and accept what they were offering. Akbar, as a spiritual leader, decided to make his own religion, Tawheed-e-Ilahi, which is divine faith. Akbar ने इसमें अपने आप को semi divine बोला, which is half God and half human. उसने बोला कि I am the prophet that is spreading the God's message, which was very wrong, and he used to make people worship the sun and the light. Whoever accepted his religion, उनको एक special turban मिलता था, उनको एक medal मिलता था जिसपे lion and sun बना हुआ होता था, and एक छोटा सा badge मिलता था जो आपको कपड़ों पे लगाने के घूमना होता था, उस पे अकबर की painting होती थी. Then we talk about Akbar's pastime policies. Pastime में वो क्या करता था, not policies. So pastime में अकबर used to hunt. He used to hunt deer, he used to hunt buffaloes, he used to hunt tigers, waterfowls with dogs. And एक दूसरा भी हट्टे का तरीका होता था जिसको कमरगाह बोलते थे, जिसमें 50,000 लोग हर डायरेक्शन से जानवरों को एक ही सेंटर की तरफ लाते हैं. एंड सेंटर में अकबर विथ हिज लोग खड़ा हुआ होता था. जैसे जानवर करीब आते थे अकबर और उसके लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते थे.
another type of hunting that he loved was cheetahs hunting. So basically इसमें ये होता था कि चीतास को लाया जाता था एंड चीतास को जंगल में छोड़ा जाता था कि दे किल एनिमल्स. जो चीता सबसे अच्छा जानवर मारता था उसको अच्छा मीट दिया जाता था, एंड ही यूज्ड टू लव डूइंग दैट एज वेल. व्हेन वी टॉक अबाउट के में रह रहे हैं किसी किस किस गांव में, तो दैट वाज अनदर थिंग जिसकी वजह से जिस जो अकबरनामे में लिखी हुई है. देन अकबर की और एक्टिविटीज़, अगर हम और एक्टिविटीज़ की बातें करें तो ही यूज्ड टू लव हंटिंग. वो तो हमने बात कर ली. पोलो पसंद थी उसको, एलिफेंट फाइट्स देखना पसंद था, रेसिंग डॉग्स उसको देखना पसंद थे, फ्लाइंग पिजन्स देखना पसंद थे, एंड ही ऑल्सो लाइक अकबर डिड नॉट ट्रस्ट की एक लवर थी अनारकली, जिसको इट इज सपोजिटली सेट के दीवार के अंदर उसको बंद करवा दिया गया था. सलीम ऑल्दो ऑन द डेथ बेड ऑफ अकबर वॉज गिवन द रूलरशिप, क्योंकि उस वक्त एक ही बेटा जिंदा था. इफ़ ही अपना लुक इन टू द पास्ट, अकबर के टोटल 3 बेटे थे, 3 में से 2 अल्कोहल एडिक्शन की वजह से मर चुके थे एंड ही वॉज दी ओनली वन, इसीलिए उसको पावर मिला. Then we are going to talk about now the last few things, which is the traveling cities. Mughal military camps. Basically, one of the British or the European historians ने जो लिखा है, they talk about the fact that the Mughal military camps were bigger than London. They were bigger than many of the countries in England. And ये इसीलिए होता था because Mughals were ex-Mongols. Mongols रहते ही टेंटों में थे. They were nomadic people. एंड वो मंथ्स एंड ईयर्स कैंप्स में रहने वाले लोग थे, तो इसीलिए अकबर को भी ये करना अच्छा लगता था. अकबर ना सिर्फ अपनी ऑफिस साथ लेके जाता था, म्यूजिशियंस, गैलरीज, वर्कशॉप्स, वो सारे अपने कैंप्स में लेके जाता था. व्हेन वी कंसिडर दीज ह्यूज कैंप्स, तो इनके ह्यूज कैरावैन्स भी होते थे जिसमें खाना, पानी और अदर रिसोर्सेज लेके जाते हैं हम. व्हेन वी टॉक अबाउट कैरावैन्स, एक नोमैडिक ट्राइब थी. नोमैडिक ट्राइब्स आर दोस्त जिनका कभी परमानेंट घर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से एक जगह आ रहे होते हैं. नोमैडिक ट्राइब्स ने ये करना शुरू कर दिया कि वो खाना एंड पानी अकबर के मिलिट्री कैंप्स को दे यूज्ड टू प्रॉस्पर एज वेल. Lastly, we're going to talk about European struggle for power. अपना अकबर ने जब पोर्ट्स वोर्ट्स बनवाए तो पोर्चुगीज, द डच, वो पहले आ गए अकबर के लैंड में टू ट्रेड, एंड देन द ब्रिटिश फॉलोड. Thank you for listening in everyone, and